Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sarina Khan, lecturer, Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of Introduction to Computers. This is week 16 and lecture number 16. आज हम अपने टॉपिक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग को कंटिन्यू करेंगे. So the learning objectives of this lecture are enterprise resource planning, customer relationship management, content management systems, virtualization and cloud computing, e-commerce and enterprise hardware. So ये हमारे इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. Starting with enterprise resource planning. Enterprise resource planning provides centralized integrated software applications to help manage and coordinate the ongoing activities of the enterprise, including manufacturing and distribution, accounting, finance, sales, product planning, and human resources. The enterprise resource planning system installed at each organization must be customized to match the business requirements of the enterprise. At a large company, an enterprise resource planning system may take 4 to 6 years to implement and cost hundreds of millions of dollars. The organization hopes to regain the investment through the advantages offered by enterprise resource planning. अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हमें सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती है ताकि ऑनगोइंग एक्टिविटीज को मैनेज और कोऑर्डिनेट किया जा सके. अब इन एक्टिविटीज में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सेल्स, प्रोडक्ट प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज हो सकती हैं. सो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हमें सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है ताकि इन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट और मैनेज किया जा सके. अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल किया जाता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है, यानी वो कस्टमाइज्ड होता है और उस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है. एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, एक लार्ज कंपनी में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम 4 to 6 years में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इस पे $100 of million इन्वेस्ट होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन इस इन्वेस्टमेंट को रिगेन करने की उम्मीद रखते हैं थ्रू एडवांटेजेस जो इस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम से हासिल होंगे. सो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम बहुत कॉस्टली हो सकता है और इस कॉस्ट को रिगेन किया जाता है एडवांटेजेस से जो ये सिस्टम ऑफर करता है. नाउ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. A customer relationship management system manages information about customers, interactions with customers, past purchases, and interests. Customer relationship management mainly is used across sales, marketing, and customer service departments. Customer relationship management software tracks leads and inquiries from customers, stores a history of all correspondence and sales to a customer, and allows for tracking of outstanding issues with customers. अब अगर हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, वो इंफॉर्मेशन जो कस्टमर से रेलेवेंट होती है, कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन से रेलेवेंट होती है, पास्ट परचेजेस से रेलेवेंट होती है और कस्टमर्स के इंटरेस्ट से रेलेवेंट होती है. सो इस इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को मेनली यूज किया जाता है सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट में. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इस सॉफ्टवेयर से आप कस्टमर की इंक्वायरीज को, कॉरेस्पॉन्डेंस की हिस्ट्री को और सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं. सो दिस इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. नाउ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स. अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम is an information system that is a combination of databases, software and procedures that organizes and allows access to various forms of documents and other files, including images and multimedia content. The content management system also provides security controls for the content, such as who is allowed to add, view and modify content and on which content the user is allowed to perform those operations. अब content management system वो information system है जिसमें different databases, सॉफ्टवेयर और procedures को यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि राइट यूजर्स इसको एक्सेस करें. अब इन डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास इमेजेस, फाइल्स, मल्टीमीडिया कंटेंट हो सकते हैं
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी हमें प्रोवाइड करता है, जैसा कि कौन इंडिविजुअल्स, कौन से यूजर्स अलाउड होंगे कि वो ऐड कर सकें कंटेंट में, व्यू कर सकें कंटेंट को या कंटेंट को मॉडिफाई कर सकें, और ये ऑपरेशंस किस कंटेंट पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमें सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी प्रोवाइड करता है। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग की। As the cost of hardware and networking services dramatically decreases, the cost of skilled specialists to maintain complex information systems increases. These opposing trends have led to an increase in the use of virtualization and cloud computing. These technologies provide for centralized or outsourced management of information system infrastructure such as servers, security and networking. The following sections describe virtualization, cloud computing and grid computing. First of all, virtualization. Due to the often dynamic nature of enterprise computing needs, IT administrators often use virtualization to adapt quickly to the change. Virtualization is the practice of sharing or pooling computing resources such as servers and storage devices. Server virtualization provides the capability to divide a physical server logically into many virtual servers. From the end user's point of view, a virtual server behaves just like a physical server. The advantages of server virtualization are that a virtual server can be created and configured quickly, does not require a new physical server, and is easier to manage. अब एंटरप्राइज कंप्यूटिंग नीड्स की डायनामिक नेचर की वजह से आईटी एडमिनिस्ट्रेटर समटाइम्स वर्चुअलाइजेशन को यूज करते हैं चेंज को अडेप्ट करने के लिए। वर्चुअलाइजेशन में हम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को पूल अप कर देते हैं, जैसा कि सर्वर्स या स्टोरेज डिवाइसेस को शेयर किया जाता है या इसमें पूलिंग की जाती है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की। सर्वर वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन हमें ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम फिजिकल सर्वर को डिवाइड करें डिफरेंट वर्चुअल सर्वर्स में। अगर हम एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वर्चुअल सर्वर बिल्कुल फिजिकल सर्वर की तरह बिहेव करता है। अब सर्वर वर्चुअलाइजेशन के एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इसको आसानी से क्रिएट और कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और आपको न्यू फिजिकल सर्वर की जरूरत नहीं होती और आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। Then storage virtualization provides the capability to create a single logical storage device from many physical storage devices. For example, hard disks from many different servers located in geographically disparate areas can be combined to appear as a single hard disk to the users of the storage. The advantages of storage virtualization are that the storage can be configured quickly, may not require the purchase of additional storage devices because the necessary capacity already may exist and is easier to manage than traditional storage. अब storage virtualization हमें ये capability provide करती है कि हम different physical storage devices को एक single logical storage device में convert कर सकते हैं। For example, अगर हम hard disk की बात करें तो hard disk जो different geographically disparate areas में है हम उन्हें combine कर सकते हैं और वो appear होगी as a single hard disk और यूजर्स इसको एज अ सिंगल हार्ड डिस्क देख सकेंगे। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप इसको क्विकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपको एडिशनल स्टोरेज परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कैपेसिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी और आप इसको ट्रेडिशनल स्टोरेज की निस्बत ज्यादा आसानी से मैनेज कर सकते हैं। नाउ क्लाउड एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। एज डिमांड फॉर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इंक्रीजेस, companies often find that using outside computing resources is more economical than building new computing capacity internally. Cloud and grid computing are two new technologies that provide flexible and massive online computing power. Cloud computing is an internet service that provides computing needs to computer users. When the company uses the computing resources, they pay a fee based on the amount of computing time and other resources that they consume. अब जैसे जैसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज हो रही है, कंपनीज आउटसाइड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज करना ज्यादा इकोनॉमिकल समझती हैं बजाय इसके कि न्यू कंप्यूटिंग कैपेसिटी को इंटरनली बिल्ड किया जाए। क्लाउड और ग्रिड कंप्यूटिंग ऐसी दो टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको फ्लेक्सिबल और मैसिव ऑनलाइन कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करती हैं।
अब अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक इंटरनेट सर्विस है जो आपकी कंप्यूटिंग नीड्स को फुलफिल कर सकती है। जब कंपनीज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज करती हैं तो वो फी पे करती हैं और ये फी बेस होती है अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग टाइम पर और दूसरे रिसोर्सेज पर जो कंपनीज कंज्यूम कर रही होती हैं। Now, cloud computing allows a company to diversify its network and server infrastructure. Some cloud computing services automatically add more network and server capacity to a company's website as demand for services of the website increases. अब क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से कंपनीज अपने नेटवर्क और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को डाइवर्सिफाई कर सकती हैं। Now, grid computing combines many servers or personal computers on a network such as the internet to act as one large computer. As with cloud computing, a company may pay for the use of grid based on the amount of processing time that it needs. Grid computing often is used in research environments such as climate research and life science problems. अब अगर हम ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करें तो ग्रिड कंप्यूटिंग में डिफरेंट सर्वर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स को नेटवर्क पर कंबाइन किया जाता है जैसा कि इंटरनेट, ताकि वो एक लार्ज कंप्यूटर के तौर पर एक्ट कर सके। जिस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने बात की, कंपनीज फी पे करती हैं और ये डिपेंड करती है कि उनका प्रोसेसिंग टाइम कितना था। ग्रिड कंप्यूटिंग को जनरली हम रिसर्च एनवायरनमेंट्स में यूज करते हैं जैसा कि क्लाइमेट रिसर्च में यूज की जा सकती है और लाइफ साइंस प्रॉब्लम्स में इसको यूज किया जा सकता है। सो ग्रिड कंप्यूटिंग में डिफरेंट सर्वर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स को नेटवर्क पर कंबाइन किया जाता है ताकि वो एक लार्ज कंप्यूटर के तौर पर एक्ट कर सके और प्रोसेसिंग टाइम पर डिपेंड करता है कि कंपनीज कितनी फी पे करेंगी। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स की। Several market sectors have taken advantage of business opportunities on the web. The more popular market segments include retail, finance, health, entertainment, and media, and travel. Examples of e-commerce: e-retail. E-retail, also called e-tail, occurs when retailers use the web to sell their products and services. Finance. Online banking allows users to pay bills from their computer or mobile device, that is, transfer money electronically from their account to a pay's account such as the electric company or telephone company. अब different market sectors में business opportunities जो web पर business opportunities हैं उनको avail किया है। अगर हम most popular market segments की बात करें तो इसमें हमारे पास retail, finance, health, entertainment, media और travel आ जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स की बात करें तो हमारे पास ई रिटेल आ जाता है। इसमें सबसे पहले ई रिटेल, जिसको हम ईटेल भी कहते हैं, इसमें रिटेलर्स वेब यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल आउट करने के लिए। फाइनेंस आ जाता है हमारे पास। ऑनलाइन बैंकिंग की हम बात करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से यूजर्स अपने बिल्स पे कर सकते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इसी तरह से ऑनलाइन ट्रेडर्स इसको यूज कर सकते हैं स्टॉक्स को परचेज करने के लिए। वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मनी मार्केट्स में, एनुइटीज में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो ये इसका फाइनेंस में यूजेज हो सकता है। देन ट्रैवल, द वेब प्रोवाइड्स मेनी ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज। इफ यू नीड डायरेक्शंस, यू सिंपली एंटर अ starting point and destination, and many websites provide detailed directions along with map. Users can make airline reservations and reserve a hotel or car. Then entertainment and media. Newsprint on the web is not replacing the newspaper but enhancing it and reaching different populations. Then health. Many websites provide up-to-date medical, fitness, nutrition or exercise information. Some websites offer the capability to listen in on health-related seminars and discussions. अब ई-कॉमर्स की जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ट्रैवलिंग में इसको यूज किया जा रहा है। अगर आपको डायरेक्शंस की जरूरत हो तो आप सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन ऐड करते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स आपको डिटेल डायरेक्शंस प्रोवाइड करती हैं अलॉन्ग विद मैप। इसी तरह से यूजर्स एयरलाइन रिजर्वेशंस करवा सकते हैं, होटल रिजर्वेशंस करवा सकते हैं और कार रिजर्वेशंस करवा सकते हैं। एंटरटेनमेंट और मीडिया में इसको यूज किया जाता है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो डिफरेंट वेबसाइट्स आपको अप टू डेट मेडिकल, फिटनेस, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। कुछ वेबसाइट्स आपको अलाउ करती हैं कि आप हेल्थ रिलेटेड सेमिनार्स और डिस्कशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज इट्स यूज इन हेल्थ।
नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करेंगे एंटरप्राइज हार्डवेयर की। Enterprise hardware allows large organizations to manage and store information and data using devices geared for heavy use, maximum availability, and maximum efficiency. Enterprises often rely on legacy systems. A legacy system is an information system that has existed within the organization for an extended length of time and is relied upon heavily. Enterprises often struggle with the decision to replace legacy systems with newer technology. अब एंटरप्राइज हार्डवेयर की मदद से ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन को मैनेज और स्टोर करती हैं ऐसे डिवाइसेस को यूज करते हुए जो हैवी यूज, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी और मैक्सिमम एफिशिएंसी को इंश्योर करती हैं। एंटरप्राइजेस ऑफन रिलाई करती हैं लेगेसी सिस्टम्स पर। लेगेसी सिस्टम ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ टाइम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन इस पर हैवीली रिलाई करती हैं। एंटरप्राइजेस के लिए ये बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना कि किस तरह से लेगेसी सिस्टम को न्यूअर टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जाए। सो लेगेसी सिस्टम वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो एंटरप्राइजेस में बहुत अरसे से हो और एंटरप्राइजेस उस पर हैवीली रिलाई कर रही हों। Now, enterprises measure the quality of their operations in a number of ways. Often, systems have specific requirements for availability, the ability to grow, scalability, and interoperability with other systems. One of the goals of an enterprise hardware is to maintain a high level of availability to end users. The availability of hardware to users is a measure of how often it is online. अब एंटरप्राइजेस मेजर करती हैं अपने ऑपरेशंस की क्वालिटी को डिफरेंट वेज में। ऑफन सिस्टम्स में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं अवेलेबिलिटी की, स्केलेबिलिटी की और इंटरऑपरेबिलिटी की। अब एक जो गोल होता है एंटरप्राइज हार्डवेयर का वो ये भी होता है कि किस तरह से हाई लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। नाउ हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम्स, A high availability system continues running and performing tasks for at least 99% of the time. High availability system वो सिस्टम होता है जो टास्क को परफॉर्म करे at least 99% of time. अब एक सिस्टम जिसका अप टाइम 99.99% है ये नॉन फंक्शनल होता है for less than 1 hour per year. अब वो घंटा जिसमें ये नॉन फंक्शनल होता है उसको हम डाउन टाइम कहते हैं और ये वो टाइम होता है जब कंप्यूटर क्रैश कर जाए या रिपेयर करने की जरूरत हो या इंस्टॉलेशन हो रही हो या इसके डिफरेंट पार्ट्स अपग्रेड हो रहे हो। नाउ स्केलेबिलिटी, एज एन एंटरप्राइज ग्रोज इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ईदर मस्ट ग्रो विद इट और मस्ट बी रिप्लेस्ड। Scalability is a measure of how well a computer hardware system, software application or information system can grow to meet increasing performance demands. A system that is designed, built or purchased when the company is small may be inadequate when the company doubles its size. When making decisions for computing solutions, managers must be careful to consider the growth plans of the company. Then interoperability. Enterprises typically build and buy a diverse set of information systems. An information system often must share information or have interoperability with other information systems within the enterprise. Information systems that more easily share information with other information systems are said to be open. Information systems that are more difficult to interoperate with other information systems are said to be closed or proprietary. अब इसी तरह से आप स्केलेबिलिटी की बात करते हैं कि जैसे जैसे एंटरप्राइजेस ग्रो करती हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को ग्रो करने की जरूरत होती है या इसको हम रिप्लेस करते हैं। स्केलेबिलिटी वो मेजर है जिससे कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्रो करते हैं कि हम ये देखते हैं कि वो किस हद तक ग्रो कर रहे हैं और किस हद तक वो परफॉर्मेंस डिमांड्स को मीट कर रहे हैं। अब वो सिस्टम जो एक स्मॉल कंपनी के लिए डिजाइन किया गया हो या परचेज किया गया हो वो मे बी इनएडिक्वेट हो जाए जब कंपनी का साइज डबल हो जाता है। तो सो जब आप कंप्यूटर सॉल्यूशंस के बारे में डिसीजंस ले रहे होते हैं तो आपको कंपनी के ग्रोथ प्लान्स को भी कंसीडर करना चाहिए। इसी तरह से हम इंटरऑपरेबिलिटी की बात करते हैं कि आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सके दूसरे सिस्टम्स के साथ। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आसानी से इंफॉर्मेशन शेयर कर सके उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं और वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इंटरऑपरेट ना कर सके, इंफॉर्मेशन शेयर ना कर सके दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ उसको हम क्लोज या प्रोप्राइटरी कहते हैं। नाउ बैकअप प्रोसीजर्स,
Business and home users can perform 4 types of backup: full, differential, incremental or selective. A 5th type, continuous data protection, typically is used only by large enterprises. Disaster recovery plan. A disaster recovery plan is a written plan describing the steps a company would take to restore computer operations in an event of disaster. A disaster recovery plan contains 4 major components: the emergency plan, the backup plan, the recovery plan, and the test plan. So first, the emergency plan. An emergency plan specifies the steps to be taken immediately after a disaster strikes. All emergency plans should contain the following information: name and telephone numbers of people and organizations to notify, for example, management, fire department, and police department; procedures to follow with the computer equipment; imply evacuation procedures; return procedures, that is, who can re-enter the facility and what actions they are to perform. आज सबसे पहले हम बैकअप प्लान में, बैकअप प्रोसीजर्स में इमरजेंसी प्लान की बात करते हैं। इमरजेंसी प्लान में स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे इमीडिएटली आफ्टर अ डिजास्टर। अब इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उसमें नेम एंड टेलीफोन नंबर्स होते हैं उन लोगों के और उन ऑर्गेनाइजेशंस के जिनको नोटिफाई करने की जरूरत होती है। हम प्रोसीजर्स को स्पेसिफाई करते हैं, एम्प्लॉय एवैक्यूएशन प्रोसीजर्स को स्पेसिफाई किया जाता है और रिटर्न प्रोसीजर्स को स्पेसिफाई किया जाता है। Now the backup plan. Once the procedures in the emergency plan have been executed, the next step is to follow the backup plan. The backup plan specifies how an organization uses backup files and equipment to resume information processing. The backup plan should specify the location of an alternate computer facility in an event the organization's normal location is destroyed or unusable. Then the recovery plan. The recovery plan specifies the actions to be taken to restore full information processing operations. To prepare for disaster recovery, an organization should establish planning committees with each one responsible for different forms of recovery. For example, one committee is in charge of hardware replacement, another is responsible for software replacement. अब जब इमरजेंसी प्लान के प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने बैकअप प्लान को फॉलो करना होता है। बैकअप प्लान को स्पेसिफाई करना चाहिए लोकेशन को, ऑल्टरनेट कंप्यूटर फैसिलिटी की लोकेशन को, कि अगर नॉर्मल लोकेशन डिस्ट्रॉय हो जाए या अनयूजेबल हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ऑल्टरनेट कंप्यूटर फैसिलिटी को यूज करेगी। इसी तरह से हम रिकवरी प्लान की बात करते हैं। रिकवरी प्लान में स्पेसिफाई किया जाता है कि वो कौन से एक्शंस होंगे जो फुल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को रिस्टोर करने के लिए लिए जाएंगे। Then the test plan. To provide assurance that the disaster plan is complete, it should be tested. A disaster recovery test plan contains information for stimulating various levels of disasters and recording an organization's ability to recover. In a simulation, all personnel follow the steps in the disaster recovery plan. अब ये अश्योर करने के लिए कि डिजास्टर प्लान कंप्लीट है, उसको टेस्ट करने की जरूरत होती है, तो हमारे पास एक टेस्ट प्लान भी होता है। सो टेस्ट प्लान की मदद से हम ये अश्योर करते हैं कि डिजास्टर प्लान कंप्लीट है। यहाँ पे हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।